पाई चार्ट कथा बुझा पाई चार्ट बहुत सहज मु तुमको बुझे दूसरी पाई चार्ट केमिति सहज केमिति लेखिब नहीं कि देख पिला माने पाई चार्ट कौन प्रश्न पड़ी देखा 2011 आर्ट्स रे प्रश्न आसाला से आर्ट्स हो साइंस हो कॉमर्स हो क्वेश्चन समस्त ये आसो पाई चार्ट बिलो शोज हाउ मिस्टर पाठक स्पेंड्स हिज मंथली सैलरी अंडर डिफरेंट हेड्स माने पाई चार्टा कौन कहूँ ना पाई चार्टा कहूँ जे द मिस्टर पाठक तांको ना मिस्टर पाठक स्पेंड्स हिज मंथली सैलरी माने मासको जो सैलरी पाती जो पैसा पाती मासको चाकरी करी से जो सैलरी को से कौन करती डिफरेंट हेड्स रे खर्च करती नहीं राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 70 वर्ड्स इंटरप्रेटिंग द इनफॉरमेशन ये जो इनफॉरमेशन देची ताको बुझेकी लिखंतु तेणु प्रथम सेंटेंस मु तुमको कही प्रथमे तो ये जो फिगरटा को करदेव चित्रटा को करदेव ये ओके भल कि से इंप्रेशन मार्किंग अच्छी तापर तुम लिखब कौन ना द पाई चार्ट द प्रेजेंट पाई चार्ट बोली लिखिदेव द प्रेजेंट पाई चार्ट शोज हाउ मिस्टर पाठक स्पेंड्स हिज मंथली सैलरी अंडर डिफरेंट हेड्स ये लिखिदे पार फर्स्ट सेंटेंस लिखिदेल हाँ ना नहीं तापर तुम देख लिख मुझे तुमको कहीदे देख केमती लिख केमती देख ये मेडिकल एक्सपेंसेस तांकर जो मेडिकल एक्सपेंसेस माने तांकर स्वास्थ्य किसी खराब हेले मेडिकल खर्च तांकर 15% जाउची ओके ही स्पेंड्स ये लिखाई ही स्पेंड्स नहीं कि ही स्पेंड्स सबुथिरे ही स्पेंड्स लगेदेव किसी दरकार नहीं सबू ये आसो मिस्टर पाठक स्पेंड्स ओके यही जो सेंटेंसटा ये जो टेंसटा यूज कर सबुथिरे मिस्टर पाठक स्पेंड्स हिज 15% ऑफ मनी मिस्टर पाठक स्पेंड्स हिज 20% ऑफ मनी मिस्टर पाठक स्पेंड्स हिज 10% ऑफ मनी एमती सबुआड़े लगेदेव ठीक अच्छे तो किसी दरकार नहीं देखिए लिख कौन लिख ना मिस्टर पाठक स्पेंड्स हिज 15% ऑफ मनी इन मेडिकल एक्सपेंसेस ये लिख कौन मिस्टर पाठक स्पेंड्स हिज 20% ऑफ मनी इन हाउस रेंट मिस्टर पाठक आउ मिस्टर पाठक माने बारंबार कहवा दरकार नहीं ही बोली लिखिदे पार ही पुओ पिलाटी नहीं कि ही बोले ही स्पेंड्स हिज 20% ऑफ मनी इन ग्रोसरी एंड फूड आइटम्स देख लिखल ही स्पेंड्स 10% फुल स्टॉप देव लिखिदेव सीधा सीधा सरल भाषा रे लैंग्वेज रे लिखिब इंग्राजी रे किछि प्रॉब्लम ना ही स्पेंड्स 10% ऑफ हिज मनी in education of children he spends 10% of his money on establishment he spends 15% of his money on savings okay spends बोली लिखिबनी he saves 15% of money okay and he spends 10% in conveyance charges and transportation charges तापर तुम कंपेयर करिवो हैला वर्णना कर सारे कंपेयर करिवो तुलना करिवो कौन सबुठु अधिक कोठी हाउस रेंट रे आउ ग्रोसरी रे खर्च तुम लिखिदेव कि द मिस्टर पाठक स्पेंड्स सेम अमाउंट ओके सेम अमाउंट ऑफ मनी और सेम अमाउंट 20% सेम अमाउंट 20% इन ऑन हाउस रेंट एंड ग्रोसरी एंड फूड आइटम्स ठीक अच्छे तापर लिखिदेव जे द लोएस्ट कोटी खर्च कर सब लोएस्ट 10% खर्च कर ही स्पेंड्स द लोएस्ट मनी 10% ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड एस्टाब्लिशमेंट एंड कन्वेंस एंड ट्रांसपोर्ट ठीक अच्छे एंड ही इज वेरी वाइज तुम कंपेयर कर कहीं से सेविंग भी कर 15% देखिए सेविंग कर तेणु ही इज वेरी वाइज so he saves money for the future he saves 15% of his money for the future okay in different saving scheme बोल लिखि दे परिबो एमती तो बने के लिखिबा कथा ठीक अछि तो केमिति देखिबा पैराग्राफ टी केमिति लिखाइ छी मिस्टर पाठक स्पेंड्स 20% of his income towards house rent okay मुझे जंत कहिथिली his budget on grocery and food items is no different माने सेम okay in other words the major portion of his earning goes to rent and food
then driven by circumstances 15% of his income includes medical expenses लिख देबो Mr. Pathak cannot ignore his conveyance and transport establishment and education children. He spends 10% each under these heads. Okay, he saves, he is saving करंती 15% of his monthly salary नहीं कि save करंती. These facts reveal that ए फैक्टर आम जाना को पाइलु मिस्टर पाठक सेंस ऑफ रेशनलिटी माने ही इज वेरी वाइज एंड प्रैक्टिकल, ही इज वेरी वाइज एंड प्रैक्टिकल लिख दे पारिबो. सो ही जुडिशियसली ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर लिख दे पारिबो एमती एंड ही सेव्स मनी 15% फॉर फ्यूचर. बुझीगला. तेणु यही भाव में पाई चार्ट उत्तर दब. ओके, थैंक यू वेरी मच. समस्त को शेयर कर. बंदी उत्कल जननी.